Hello students, so now let us continue our chapter number 1, super senses. So look here, here are two flowers, flower A and flower B. So flower A, when you smell the flower A, it will smell really nice. But when you smell flower B, it won't smell really nice. Why? Why this has happened? Because in sometimes some people can smell different from you. Like this flower, ये जो फ्लावर है उसकी स्मेल किसी लोगों को अच्छी लगती है, जबकि किसी लोगों को इस फ्लावर की स्मेल अच्छी नहीं लगती, जबकि कुछ लोगों को इस फ्लावर की स्मेल अच्छी लगती है और दूसरे फ्लावर की नहीं अच्छी लगती। उसी तरह look into your textbook on page number 5. There is one example that there are two children, there are two little babies, और उन दोनों की मदर ने क्या किया, एक दोनों की मदर सिस्टर थी, तो एक ने अपने बेबी को अपनी बहन के घर पे रख दिया और उसको कहीं पर बाहर जाना था इसलिए। देन वो दोनों बच्चे अपनी, एक की मम्मी थी और एक की मौसी थी, तो उन दोनों बच्चों ने एक ही टाइम पे पॉटी की, टॉयलेट की, तो उसकी मौसी ने क्या किया, दोनों बच्चों की टॉयलेट साफ की। लेकिन जब वो अपने खुद के बच्चे की टॉयलेट साफ कर रही थी तब उसने अपने माउथ को कवर नहीं किया, और जब भी दूसरे बच्चे की टॉयलेट साफ कर रही थी अपने सिस्टर के बच्चे की, तब उसने अपने माउथ को क्लॉथ से कवर कर दिया। सो व्हाई दिस इज हैपेंस, बिकॉज the mother of the baby A won't like the smell of the children B. जो वो जिस लड़के की वो मौसी थी उसको उसके भांजे की पॉटी की स्मेल पसंद नहीं आई, जबकि उसके खुद के बच्चे की स्मेल उसको, वो रोज उसकी पॉटी साफ करती थी खुद के बच्चे की, इसलिए उसको उसके बच्चे की पॉटी की स्मेल की वजह से अपना माउथ कवर नहीं करना पड़ा था। Now let us see further in your book. So here I have drawn some birds. You can look, here are so many birds, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 birds here. Now most of the birds have their eyes on either side of the head. You have seen that most of the birds have eyes on the either both the sides of their face, right? Now their eyes can focus on two different things at a time. Birds' eyes are so superficial that they can be focused on two different things at the same time. Our eyes are not superficial, our eyes are simple, which can focus at one place at one time. But the birds have superficial eyes, they can see two different places at the same time. Now, when they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. So, जब birds सामने देखते हैं, in front of them, their eyes are focusing on the one object. Like this, you can see. इस birds की आंखें दोनों सामने देख रही है, तो इसकी आंखें जिस ऑब्जेक्ट को भी देख रही है, इनका फोकस दोनों आइज का उसी ऑब्जेक्ट पर रहेगा। जबकि look here, this bird, इसकी आंखें दोनों अलग-अलग साइड में देख रही हैं, तो these birds can see on two different things at the same time. Now, you must have seen birds moving their neck very often. आप लोगों ने देखा होगा कि birds हमेशा अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं. So, do you know why in most of the birds eyes are fixed and cannot move? आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के अंदर उनकी जो आईज है ना, वो हमारे जैसे घूम नहीं सकती है, उनकी आईज फिक्स्ड होती है कि वो एक ही डायरेक्शन में रहती है, इसीलिए अगर उनको आगे पीछे देखना हो तो वो अपनी गर्दन हिलाकर देखते हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड, उनको अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। नाउ लुकिंग विथ वन और बोथ eyes,
Close your right eye or cover it with your hand. Now tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. So आपको क्या करना है, अपने एक हाथ से अपनी एक आंख बंद कर देनी है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि एक कॉर्नर में जाके कुछ एक्शन करे. So could you see your friend's action without moving your neck? तो क्या आप लोगों ने अपने फ्रेंड की एक्शन देखी अपनी गर्दन हिलाए बिना? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों आंखें खोल देनी है और अपने फ्रेंड को देखना है, लेकिन अपनी गर्दन नहीं हिलानी है. You are not supposed to move your neck. Now, what was the difference on looking with one or both eyes? तो अब दोनों में डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था अपनी दोनों आंखों से देखने के बाद? You should have to tell your parents. So now, toss a small ball or a coin and try to catch it. अब आप लोगों को क्या करना है, एक छोटी बॉल या तो कॉइन उछालनी है और उसको कैच करने के लिए ट्राई करना है. Try it with your eyes open, then close one eye and try to catch it. And when was it easier to catch? आप लोगों को क्या करना है, पहली बार अपनी दोनों आंखें खोलकर उसको उछालना है और कैच करना है, और सेकेंड टाइम अपनी एक आंख बंद कर देनी है और उसके बाद कैच करना है. तो दोनों में से कौन सा इजी रहेगा वो बताना है आप लोगों को. Now imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. तो अब आप लोग ऐसा सोचो कि जहां पर आपके कान है वहां पर अगर आपकी आंखें होती तो what would you able to do then, which you cannot do now. तो उस वक्त आप क्या करते जो अभी आप नहीं कर सकते हो? So some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. Look, kites. Do you know kites, eagles and vultures? ये सारे birds हैं. वो लोग हमसे कुछ ज्यादा ही दूर से अच्छे से देख सकते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. ये लोग 8 मीटर दूरी से जो चीज देख सकते हैं वो हम लोग 2 मीटर की दूरी से ही देख सकते हैं. So now you can guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground. जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप बेंच पर बैठे हो, आप रोटी खा रहे हो और दूर से ईगल आकर आपकी रोटी लेके चला गया. तो उसी तरह से वो बहुत ही दूर डिस्टेंस से देख सकता है जबकि हम लोग उतने दूर से नहीं देख सकते हैं. So now let's move further. Do animals see colors? आप लोगों को पता है कुछ एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं, कुछ एनिमल्स नहीं देख सकते हैं. Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. तो सभी एनिमल्स सभी कलर नहीं देख सकते. जैसे हम लोग कितने सारे कलर्स देख सकते हैं तो वैसे ही एनिमल्स सारे कलर नहीं देख सकते हैं. नीचे देखो आप लोगों की बुक में पिक्चर्स दी हुई है कि कौन से एनिमल कौन सी पिक्चर्स कैसी दिखती है उन लोगों को. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals they are awake at night can see things only in black and white color. तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स सुबह को देखते हैं सब कुछ, उन एनिमल्स को कुछ कलर्स दिखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात को जागते हैं फॉर एग्जाम्पल आउल, तो उन लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही दिखता है. उन लोगों को कलरिंग उसके ब्लैक एंड व्हाइट उससे ज्यादा दूसरे कोई भी कलर नहीं दिखते हैं. So children, on page number 8 there are some activities which you can read by yourself and do at your home. Now on page number 9, sound send messages.
Do you know that some of the sound send messages? Yes. So, high up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. Langur warns are a type of monkeys which can make sound when the tiger or leopard or something dangerous animals which are going to be attacked on them, so they make some kind of sound which is called as a special warning call. So birds also give alarm calls to warn about the danger. Birds also do the same things. So some birds even have different sounds for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. So birds also use some sound for sending messages for a warning call that their enemies are there. Birds make different sound. For example, if the danger animal coming from the sky towards them, so they make some different sounds, and if the animal is coming from the ground, at that time also the birds make the different sound. So when any animal gives the warning call, all the animals in that area understand the danger signal. So when a single animal or a bird give the warning call, so in that area all the animals and birds remember that call and they flew away or run away. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. Some animals are behaving in very different ways when the earthquake or storm is going to be come. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. जो लोग जंगल में रहते हैं, आज भी कुछ लोग जंगल में रहते हैं, तो वो लोग उन लोगों को ये सारे साउंड्स और इनके जो भी साइन है, वार्निंग कॉल्स है, वो सारे उनको समझ में आते हैं, जिनकी वजह से वो लोग भी बच जाते हैं. So dolphin also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. जो डॉल्फिन्स है, आप लोगों ने मूवीज या फिर किसी भी वीडियो क्लिप में डॉल्फिन्स देखी होगी, तो वो डॉल्फिन्स भी अपने खुद के साउंड प्रोड्यूस करती है जो सबसे डिफरेंट होता है, और वो उनसे मैसेजेस भेजती है पानी के अंदर. और साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि सभी एनिमल्स के खुद की स्पेशल लैंग्वेजेस होती है, जैसे हम लोगों की लैंग्वेज है वैसे. Now, just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to your classroom. अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन्स खुद के साउंड प्रोड्यूस करती है, खुद की लैंग्वेजेस है उन लोगों की, उसी तरह से आप लोगों को भी अपने कोड वर्ड्स या फिर कोड लैंग्वेजेस रखनी है, जिससे आप अपने फ्रेंड को बता सको कि अगर आपकी टीचर क्लासरूम में आ रही है तो आप उनको बता सको कि हाँ ऐसी कोई साइन करनी है जिससे आपके फ्रेंड को पता चल जाए.